हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज महेंद्र सिंह। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स। इसमें स्पेशली प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चन है जो कि हमारे अपकमिंग नेट एंड जीआरएफ एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो यू आर रेडी फॉर वॉचिंग, लेट्स बीइंग स्टार्ट। तो एज यूजली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ लाइंस सुनाना चाहता हूँ जो इस तरह हैं कि खुद के ही जज्बातों से यूं नम नहीं होता। दिल मेरा पत्थर दिल मेरा भी पत्थर होता तो यूं गम नहीं होता। अब समझ गया हूँ गलत कहते हैं लोग अब समझ गया हूँ गलत कहते हैं लोग, दर्द बांटने से भी दर्द कम नहीं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस जो कि वन लाइनर सीरीज में है और इसमें हम मे बी अप टू 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह है कि ओ दिस इज द symbol in background in my video background genetics and plant breeding. So now we are going to start plant breeding. Okay, so you see first question is that transfer of pollen grain from the anther to the stigma of same flower is called as। जब देखिए, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता जा रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी आसानी हो। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड एज। मतलब कि जब एंथर स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन से एंथर निकलकर स्टिग्मा पे गिरता है या पहुंचता है और सेम फ्लावर पे इज कॉल्ड एज। आंसर इज ऑटोगेमी। ठीक है, ऑटोगेमी गॉट इट। ऑटोगेमी मीन्स होता है कि पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगेमी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लावर डज नॉट ओपन एट ऑल, pollination at fertilization occur in unopened flower, but this ensure complete self-pollination and prevent cross-pollination. The mechanism is referred as। Answer is क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी किस में पाई जाती है? आंसर इज व्हीट है, ओट है, बार्ली है एंड अदर ग्रासेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर of one plant to stigma of another plant is called। Answer is polygamy। जब पोलन ग्रेन एंथर से होकर वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो उसे हम एलोगेमी या क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। क्वेश्चन इज दैट if male and female flower are present but if male and female flower are separate but present in the same flower plant, the condition is called as। Answer is monoacy। ठीक है, सेम इन्फ्लोरेंस क्लस्टर मैंगो बनाना and coconut separate inflorescence, right? Maize, grapes, rubber, cassava, curbit and peanut, walnut। Clear? So before moving to next slide, हमें ये सारी क्वेश्चन रिपीट करने हैं इन वेरी स्पीड क्विकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि
Transfer of pollen grain from the anther to stigma of same flower is called as? Answer is autogamy. Next question, if the flower does not open at all, pollination and fertilization occur in unopened flower bud. This ensures complete self-pollination and prevent cross-pollination. The mechanism is referred as, answer is cleistogamy. Clear? Next question, transfer of pollen grain from the anther of one plant to the stigma of another plant is called? Answer is allogamy या cross pollination. Next question, in if male and female flower are separate but present in the same flower plant, the condition is called monoacy. Clear? Same inflorescence, cluster mango, banana and coconut separate or separate influence, maize, grapes, rubber, cassava, beet, peanut and walnut. Okay, so now we are moving to next slide, and next slide is first question is that if male and female flower are present in different plant, the condition is referred as, answer is dioacy. Example है date palm, papaya, hemps, asparagus and spinach. Clear? Next question, if pistil mature before stamen, mechanism is called as, answer is protogyny. It is present in Vajra. Next question. Next question is if stamen mature before pistil, mechanism is called as, answer is protoandry. Answer is maize and sugar beet. Clear? Next question. If the pollen from one flower of one plant falls on the stigma of other flower of the same plant, such mechanism is referred as, answer is gitenogamy. Gitenogamy is present maize. Clear? Next question. Genetically gitenogamy is equal to, answer is autogamy, means self-pollination crop. Clear? So repeat all these questions before moving to next slide. As you know, first question is that if male and female flower are present in different plant, the condition is referred as, answer is dioacy. Clear? Next question है, if pistil mature before stamen, mechanism is called as, answer is protogyny. It is present in Vajra. Next question is if stamen mature before pistil, mechanism is known as protoandry. Answer is present in maize and sugar beet. Clear? Next question की हम बात करेंगे, if the pollen from a flower, if the pollen from a flower of one plant falls on the stigma of another flower of the same plant, such mechanism is referred as, answer is gitenogamy. Gitenogamy is the example of autogamy. Clear? Now we are moving to next slide. I hope these all questions you are able to understand. So now we are moving to next slide, and first question is that if in crops cross pollination occur up to an extent of 5 to 30% referred to as, answer is often cross pollination crops. Clear? It is jowar, cotton, pigeon pea and sunflower. Or brassica is also okay. Next question. Bulbs are modified form of, answer is flower. Next question. The condition if in which seed are formed but the embryo develop
without the fusion of male and female gamete is known as? Answer is apomixis. Next question. If the vegetative cell of the ovule develop into unreduced embryo sac after meiosis and the embryo develop from egg cell or some other cell of such an embryo sac, such a condition is referred as? Answer is apospory. Clear? Next question. Next question. Development of an embryo from synergid or antipodal cells referred meiosis and fertilization is called as? Answer is apogamy. Clear? So repeat all these question again. Moving to next slide. If cross pollination occur up to an extent of 5 to 30%, referred to as often cross pollination, it is present in jowar, cotton, pigeon pea, sunflower, etc. Next question. Bulbils, bulbils, bulbils are modified form of flower. Answer is flower. Next question. The condition in which seed are formed but the embryo develop without the fertilization, without the fusion of male and female gamete is known as apomixis. Next question. If vegetative cell of the ovule develop into unreduced embryo sac after meiosis and the embryo develop from egg cell or some other cells of such an embryo sac, such a condition is referred as? Answer is apospory. Clear? Next question. ये हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम synergid or antipodal cells without meiosis and fertilization is called as? Answer is apogamy. तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करने से पहले मैं आपको ये कुछ लाइंस सुनाऊंगा, बताना चाहता हूँ, जो कि मुझे मेरी लाइफ में इन लाइनों ने बहुत मोटिवेशन दी। लाइन इस तरह है कि महबूब की गली हो या पुरखों की जमीन, महबूब की गली हो या पुरखों की जमीन हो, हमने एक बार छोड़ा फिर मुड़कर नहीं देखा। तो ये कुछ लाइन्स थी, बट मैंने एक कविता भी लिख के रखी है, वो मैं आपको आफ्टर कंप्लीट नेक्स्ट स्लाइड मैं आपको सुनाऊँ, ठीक है? तो you see, next question is that introduction of semi-dwarf variety Sonera 64 dwarf wheat variety, introduction of semi-dwarf wheat Sonera 64 Dalmarazo rice PN1 IR8 2836 are example of? Answer is primary introduction. Clear? Next question. Kalyan Sona Sonalika wheat selection from Simit, Mexico material are example for? Answer is secondary introduction. Clear? Next question. NBPGR. Answer is the bureau has its headquarter of at listen. The bureau has its headquarter at IARI, New Delhi. It has 5 substations for testing the introduced plant material. These represent various climate zones of India. They are. Next question is to keep material in isolation to prevent the spread of disease, pest, etc. present in them to the other material is referred as? Answer is quarantine. Next question. Okay, so
repeat all these questions. First question is that introduction of semi-dwarf wheat Sonera 64 Lerma Raju rice TN1 IR 8 28 36 are example of primary. Answer is primary introduction. Next question Kalyan Sonalika wheat selection from Smith Mexico material are एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स. आंसर इज द ब्यूरो हैज इट्स हेडक्वार्टर एट IARI न्यू दिल्ली. इट हैज 5 सब स्टेशन फॉर टेस्टिंग द इंट्रोड्यूस plant material. These present various climatic zone of India. They are okay. Next question है to keep material in isolation to prevent the spread of disease based etc present in them to the other materials is referred as. Answer is quarantine. Clear. Next question है the process that lead to the adaptation of a variety to new environment. Answer is acclimatization. Clear. Next question की हम बात करेंगे the sum total of genes or hereditary material in a species is called as. Answer is germplasm. Clear. Next question the gradual loss of variability in the cultivated form and in their wild relatives. Answer is genetic erosion. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे द एरिया ऑफ डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस इज रिफर्ड एज. आंसर इज जीन सेंचुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल प्लांट फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज. आंसर इज सिलेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ प्लांट selected to be advanced to next generation from a population is known as. Answer is selection intensity. Okay, now we are repeat all these question again. So you see first question is that the process that lead to the adaptation of a variety to new environment. Answer is acclimatization. Clear. Next question the sum total of gene or heredity material in a species is called as. Answer is germplasm. The sum total of genes or heredity material in a species is called germplasm. Clear. Next question की हम बात करेंगे the gradual loss of variability in the cultivated form and in their wild relative. Answer is genetic erosion. Genetic erosion क्या है? यही है कि उसकी जो वेरिएबिलिटी लगातार लॉस होता जा रहा है उसकी वेरिएबिलिटी में कल्टीवेटेड फॉर्म में. तो इट इज कॉल्ड और वाइल्ड रिलेटिव में और देयर वाइल्ड रिलेटेड वेराइटीज में तो इट इज कॉल्ड जेनेटिक इरोजन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे an area of diversity protect from human interference is referred as. Answer is gene sanctuary. Next question की हम बात करेंगे isolation of desirable plant from the population is called as. Answer is selection. Next question हम बात करेंगे percentage of plant selected to be advanced to next generation from a population is known as. Answer is selection intensity. Clear. चलिए तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड इज दैट here first question is the difference between the mean of selected plant and mean of parental population is referred as. आंसर इज सिलेक्शन डिफरेंशियल. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे द रेशियो ऑफ जीनोटाइप वेरिएंस टू द फिनोटाइपिक अ टोटल वेरिएंस इज नोन एज. आंसर इज हेरिटेबिलिटी. इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज.
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, द रेशियो ऑफ जीनोटिपिक वेरिएंस टू द टोटल ऑफ phenotypic variation is also called as, answer is broad sense heritability. Next question is that formula for broad sense heritability, answer is H B yes equal to VG upon VP or VG upon VG plus VE. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, द प्रोपोर्शन ऑफ एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन टू द टोटल वेरिएशन इज कॉल्ड एज नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी. फॉर्मूला फॉर नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी, आंसर इज एच एन एस इक्वल टू 1/2 डी अपॉन VP, दी एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन. Repeat all these questions again. The difference between the mean of selected plant and mean of parental population is referred as, answer is selection differential. Next question, the ratio of genetic variation to the phenotypic or total variation is known as, answer is heritability. It is generally expressed in percentage. Clear. Next question, the ratio of genotype variation to the total of phenotypic variation is also called as, answer is broad sense heritability. Next question, formula for broad sense heritability, answer is HBS, H कोष्टक BS means broad sense heritability, equal to VG upon VP or VG upon VG plus VE. Clear. Next question, the proportion of additive genetic variation to the total variation is called narrow sense heritability. Answer, next question, formula for narrow sense heritability, answer is HN. H means narrow sense heritability, equal to 1/D, D upon VP. D is additive genetic variation. Next question, improvement in the mean phenotypic value of the selected plant over the parental population is known as, answer is genetic advance. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, द सक्सेस ऑफ जेनेटिक एडवांस. द सक्सेस ऑफ जेनेटिक एडवांस under selection depend on, answer is genetic variability, heritability and selection intensity. Next question, formula for genetic advance. Formula for genetic advance, answer is GA equal to P into K into H. H means broad sense heritability. Clear. So next question is that, okay, so where P is phenotypic standard deviation of the character in the population, K is selection differential 2.06 when 5% of the population is selected. Next, H is a heritability in broad sense. Next question, selection method useful for purification of pure line is, answer is mass selection. Okay, so next, first question, repeat all these questions. Improvement in the mean phenotypic value of the selected plant over the parental population is known as genetic advance. Clear. The success of genetic advance under selection depend on, answer is genetic variability, heritability and selection intensity. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, फॉर्मूला फॉर जेनेटिक एडवांस इज, आंसर इज जेनेटिक एडवांस GA इक्वल टू P इंटू K इंटू H BS, H कोष्टक इन BS ब्रॉड सेंस, वेयर P phenotypic standard, K selection differential, H heritability in broad sense. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, सिलेक्शन मेथड यूजफुल फॉर
purification of pure line is? Answer is mass selection. Okay. So next question, evolution of birth of plant on the basis of their performance of their progenies is called as? Answer is progeny test. Progeny test was developed by, answer is Johnson, Lewis D. Wilmorin. Okay. Next question. Progeny test is also called as, answer is Wilmorin isolation principle. Wilmorin principle. ठीक है. Next question. The progeny of a single homozygous plant of a self-pollinated species is referred as, answer is pure line. Clear? Next question. Next question है, all the phenotypic difference within a pure line are due to the, answer is environment and have no genetic basis. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, proportion of completely homozygous plant in the population was given by, answer is 2m upon dash 2mn. Answer is where m number of generation of selfing, n number of genes separating. Clear? So moving to next slide, all these question repeat again. So first question है, evolution of birth of plants on the basis of the performance of their progeny is called as, answer is progeny test. Progeny test was developed by Lewis D. Wilmorin. Progeny test is also known as Wilmorin principle. Answer is Wilmorin principle. Next question, the progeny of a single homozygous plant of a self-pollinated species is referred to as, answer is pure line. All the next question है, all the phenotypic difference within a pure line are due to the, answer is environment and have no genetic basis. Next question, proportion of completely homozygous plant in the population was given by, answer is 2 to the power m dash minus 1 upon 2 to the power m पुस्तक 1 n, where m is number of generation of selfing and number of genes segregating. So move to next slide. मैं आपको बताऊं कि मुझे प्लांट ब्रीडिंग का शौक कब से लगा. एक तो ऐसे मुझे प्लांट ब्रीडिंग का शौक पता कब से चढ़ा, जब मैं अपने सर डॉक्टर तेजवीर सिंह से मिला तो मैंने देखा यार इज अमेजिंग, इतना उनको नॉलेज है. मैं एग्रीकल्चर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था. मैंने एमएससी कंप्लीट करने, एमएससी में जब मैं थीसिस करने आईजीएफआरआई पहुंचा और अपने गाइड डॉक्टर तेजवीर सिंह सर से मिला तो उनसे मिलके मुझे लगा कि यार मैं ये तो प्लांट ब्रीडिंग इज द बेस्ट सब्जेक्ट, आई कैन डू ग्रेट वर्क इन दिस साइड. तो तब से लग गए अपनी मेहनत करने और सोच लिया कि झंडा गाड़ के दिखाएंगे फील्ड में. पहला तो मैंने सोचा कि मुझे यूट्यूब बनाकर कुछ लेक्चर के लिए अपलोड करूंगा और उसमें मैं खुद की तैयारी भी होगी और कम्युनिकेशन में भी इम्प्रूवमेंट होगा. इसी के साथ लग गए बनाते हुए वीडियो, वन लाइनर क्वेश्चन से मेरा भी रिवीजन होता है. और सबसे पहले मुझे जीआरएफ नेट एग्ज़ाम क्रॉस करना है, उसके बाद
देखूंगा, कहीं पीएचडी के लिए अप्लाई करूंगा, देखते हैं आगे होता है क्या। तो अभी तो खैर ज़्यादा लेक्चर नहीं लेना है, तो हमें अपनी ऑनलाइन क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मास एंड प्योर लाइन सिलेक्शन आर अप्लाइड टू जेनेटिकली वेरिएबल एंड होमोजाइगस पॉपुलेशन ऑफ, आंसर इज सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करेंगे, द मेथड जनरली यूज्ड फॉर हैंडलिंग ऑफ सेग्रीगेटिंग जनरेशन में बी grouped into, answer is pedigree method, bulk method and backcross method. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ एंसेंटर्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड, आंसर इज पेडिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, बल्क मेथड वाज फर्स्ट यूज बाय, आंसर इज निल्सन एहले इन 1908 एट सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्क मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, आंसर इज mass method or pure population method of breeding or an evolutionary method of breeding. Okay, so repeat all these questions. Mass and pure line selection, mass and pure line selection are applied to genetically variable and homozygous population of, answer is self pollination crop. क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो जेनेटिकली मेथड जनरली यूज्ड फॉर हैंडलिंग ऑफ, द मेथड जनरली यूज्ड फॉर हैंडलिंग ऑफ सेग्रीगेटिंग जनरेशन में बी ग्रुपेड एज, आंसर इज पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, बैकक्रॉस मेथड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंसेंटर ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड, आंसर इज पेडिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, bulk method was first used by, answer is Nielsen Ehle in 1908 by at a solve. Next question, bulk method is also called as, answer is mass method and population method or breeding evolutionary method of breeding. क्लियर है। तो हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड है, ओके सो वी हैव डन 10 स्लाइड। ओके सो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं और आगे ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग की क्लासेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।